Good morning, dear students. Today we are going to learn about future tense. Our first part is future indefinite tense or future simple tense. In this tense, shall and will are used as the auxiliary verb or helping verb. Then first form of verb is used. Shall is used with first person singular pronoun and first person plural pronoun. First person singular is I and first person plural is we. Will is used with third person singular, that is he, she and it. Any name, इन सब के साथ will का हम यूज करते हैं. He is third person singular male pronoun, she is third person singular female pronoun, it is used for third person singular thing, any object. In affirmative sentences, this order gets reversed. Okay, in affirmative sentences, when we try to show the firmness, assurance, promise, certainty, vow, swearing, or some definite thing we want to express, then this order of usage of helping verbs gets reversed. Understood? मीन्स जब हम किसी चीज़ की फर्मनेस मीन्स उसकी कन्फर्मेशन, अश्योरेंस देते हैं, प्रोमिस करते हैं, सर्टेनिटी शो करते हैं, वाव, स्वीरिंग करते हैं या कोई डेफिनेट उसके बारे में एक्सप्रेशन देते हैं, दैट टाइम आई और वी के साथ विल का यूज़ करेंगे एंड ही, सी, इट और एनी नेम के साथ में शेल का यूज़ करेंगे. दिस इज द डिफरेंस. सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड this difference by means of some examples. First, let us know the structure of simple sentences. In simple sentences, affirmative or assertive sentences, subject will be followed by shall and will be followed by V1, that is first form of verb, and object. So this is the order changed which has been shown here, that is फर्मनेस, अश्योरेंस, प्रॉमिस के साथ में हम सेल का यूज़ करेंगे किसमें, ही, सी, इट और एनी नेम के साथ, और विल का यूज़ करेंगे आई एंड वी के साथ. सो इन सिंपल सेंटेंसेस स्ट्रक्चर विल बी दिस: सब्जेक्ट, उसके बाद में सेल या विल, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल: आई सेल हेल्प यू. सो इट इज सिंपल सेंटेंस, आई सेल हेल्प यू. there is no wow, assurance, promise like that. It is simple. If I say with confirmation, मुझे किसी को पूर्ण विश्वास दिलाना कि मैं आपकी कन्फर्म हेल्प करूंगा ही करूंगा, प्रॉमिस करना मुझे, देन आई विल से आई विल हेल्प यू. आई विल हेल्प यू. सो डियर स्टूडेंट्स, देर इज ए डिफरेंस बिटवीन द टू सेंटेंसेस. देर इज सेंस इज डिफरेंट. ओके, हियर इट इज सिंपल, ओके आई विल हेल्प, आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करूंगा, बट यहाँ पे कन्फर्म आपकी हेल्प करूंगा. सो कन्फर्मेशन के लिए आई के साथ विल का यूज करते हैं और वी के साथ भी विल का यूज करते हैं, एंड ही, सी, इट के साथ में शेल का यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल, सेम सेंटेंस इज टू बी रिटन विद थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ही शेल हेल्प मी. मीन्स अगर हम किसी की हेल्प के बारे में इतने श्योर हैं, कन्फर्म हैं, दैट टाइम उसके लिए हम शेल का यूज करेंगे, वो मेरी कन्फर्म हेल्प करेगा. ओके, श्योरली एंड सर्टेनली. दिस इज द डिफरेंस. ही विल टॉप द एग्जाम. ओके, दे विल लीव दिस हाउस. सो फ्यूचर टेंस is used to express or denote an action which is going to happen in future. Tomorrow, next time, इसके साथ भी हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विल लीव फॉर दिल्ली, आई शैल लीव फॉर दिल्ली टुमारो. ओके, ही विल कम टू माई हाउस नेक्स्ट मंडे, लाइक दैट. इन नेगेटिव सेंटेंसेज दिस स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस: सब्जेक्ट एट फर्स्ट, देन शेल ऑब्लिक विल, इनमें से कोई भी एक अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट या प्रोनाउन यूज होगा, देन नोट का यूज करेंगे, फॉलोड बाय V1 एंड देन एट लास्ट ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल्स: आई शैल नॉट हेल्प यू,
he will not top the exam. So subject shall oblique will, not V1 object. He will not top the exam. They will not leave this house. So this is about negative sentences in future indefinite tense. In interrogative sentences, the structure of the sentence will be like this. Shall oblique will, that is helping verb or auxiliary verb, will come at first of the sentence, then it will be followed by subject, followed by V1, okay, V1, then object, and at last sign of interrogation. Example is, shall I help you? Will he top the exam? Will they leave this house? So this was about interrogative sentences. But there is one more structure, that is mixed structure of interrogative and negative, and that is नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. जो सेंटेंस इंटरोगेटिव भी हो और जिसमें नेगेटिव सेंस का भी यूज किया गया हो, उसमें स्ट्रक्चर कैसे होगा. सेल ऑब्लिक विल कम एट फर्स्ट, देन सब्जेक्ट, देन नोट, देन V1 प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं. विल दे नॉट लीव दिस हाउस? Shall I not help you? Will he not top the exam? Okay, so this is the way how to change the simple sentences or interrogative sentences into interrogative and negative. This is known as transformation of sentences. We have been transforming the same sentences that we have used as an example in simple sentences. Same are used in negative sentences, that is the transformation. Now the uses of future indefinite tense, particularly where do we need to use future indefinite tense? So with the words like next, tomorrow, shortly, in a few moments, इन वर्ड्स के साथ में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई शैल विजिट शिमला नेक्स्ट मंथ, आई शैल विजिट दिल्ली नेक्स्ट मंडे, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो. ओके, सो फ्यूचर इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए, डिनोट करने के लिए हम फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं. एंड मेनली इन वर्ड्स के साथ नेक्स्ट, टुमारो एंड शॉर्टली, इन ए फ्यू मोमेंट्स, दे आर द टाइम एडवर्ब्स. टाइम रेफरेंस, ही विल रिसीव द लेटर टुमारो, एंड इसमें हम टाइम रेफरेंस देते हैं टुमारो बाय सो एंड सो टाइम. ओके, शी विल सी यू इन ए फ्यू मोमेंट्स, शी विल सी यू इन ए फ्यू मोमेंट्स, सी यू मीन्स मिलना आपसे, मीटिंग. She will see you in a few moments. So this is how to use future indefinite tense with these words. Please keep in your mind. Now it is the turn to learn about future continuous tense. Future continuous tense is used to denote an action which will be continue in future at a particular time, that is with a time reference. कल ये काम हो रहा होगा, next Monday वो मेरे घर आ रहा होगा. Okay, like that. So in this, helping verb will be used as shall be and will be with V1 and ing. As you know, in all continuous tenses, first form of the verb with ing form is used. In affirmative sentences, this structure will be like this. Shall, subject followed by shall be and will be, then first form of verb, then ing, that is V1 with ing plus object. Example, he will be waiting for you. इसमें अगर हम टाइम रेफरेंस भी दें, then it will be much better. He will be waiting for you tomorrow by this time. Okay, I shall be playing golf, I shall be playing golf by today evening. So आज शाम को मैं गोल्फ खेल रहा हूँगा. आप टाइम रेफरेंस भी दे रहे हैं.
So it is an event which is going to happen in future and it will be continue, it will be progressive. That is the difference between future simple and future continuous. In negative sentences, the structure will be like this: shall, subject plus shall oblique will. Okay, in negative sentence subject will come at first, shall oblique will, helping verb, then not, then be will come after not. Okay, this is the difference you need to keep in your mind. be will be always used after not, not के बाद में ही be का हम यूज करेंगे. then V1 with ing and object. He will not be playing golf. Okay, he will not be playing golf. Dear students, कभी भी इसको ये मतलब ना, he will be not playing golf, right? He will not be playing golf. two auxiliary verbs के बीच में आपको not का यूज करना है. I shall not be watching TV. In interrogative sentences, the structure will be like this: helping verb और auxiliary verb सबसे पहले आएंगे, shall oblique will, then subject, then next auxiliary verb be, followed by V1 with ing plus object and sign of interrogation at last. Example for this is: will he be waiting for you? Will he be, so auxiliary verb, then subject, then again auxiliary verb be, waiting for you. So this is V1 with ing and sign of interrogation at last. Shall I be playing golf? So you can make n number of sentences by your own if you are aware of the structure of a particular tense and particular sentence. Then the fourth structure of interrogative negative or negative interrogative sentences. In this, shall oblique will come at first, followed by subject, then not be. Okay, not be plus V1 with ing plus object. Like, let us change this into interrogative negative sentence. Shall I not be playing golf? Shall I not be playing golf? Let us take this one. Will he not be waiting for you? So this has become negative interrogative. This is the transformation. Uses of future continuous tense, कहाँ पे हम इनका यूज करते हैं? There is a time adverb while, and आप इसके बारे में पहले भी इसके यूज बहुत सारे देख चुके हैं. Dear students, कोई भी एक्टिविटी, जब दो एक्टिविटी हो रही हो उनमें कंपैरिजन करना हो और टाइम रेफरेंस देना हो, that is contrast between two activities which are in progressive, and if you want to show the comparison or contrast between the two, then while is used as time adverb. So while के साथ हम future continuous tense का यूज करेंगे, जैसे present continuous का करते थे और past continuous का, like that. I shall be waiting for you while my sister will be taking tea. So future में, आने वाले टाइम में आप बता रहे हैं कि आप उस समय क्या कर रहे होंगे और आपकी सिस्टर क्या कर रही होगी. सो देयर इज ए साइमल्टेनियस एक्शन गोइंग ऑन. ओके, दो काम एक साथ हो रहे हैं और दोनों का कंपैरिजन किया गया है. सो वाइल का यूज किया बीच में. सो वाइल के साथ में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे. देन देयर आर सर्टेन अदर वर्ड्स लाइक नेक्स्ट, टुमारो, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम. इनके साथ भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं. जैसे ही विल बी डिलीवरिंग हिज लेक्चर टुमारो एट दिस टाइम. सो you are denoting or showing the progression of an action in future, right? At this time, कल इस समय काम और वो अपना लेक्चर दे रहे होंगे. I shall be visiting Shimla next week at this time. Okay, and at this moment, my brother will be arriving here tomorrow at this moment. I will be appearing for the exam next year. So next का हमने यूज कर दिया. Tomorrow हो गया at this time and at this moment.
Now we will talk about future perfect tense. And as you know, perfect tense is used to denote an action completion, that is an action which is completed when you talk about it. जब भी स्पीकर उसके बारे में बताते हैं तो it means वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है या हो चुका होगा, right? So in this case, shall have and will be used as the auxiliary verb or helping verb followed by V3. As you know, in all perfect tenses, third form of verb is used. So this is the similarity. It will be easy to understand and it will be easy to retain in your mind. In affirmative sentences or simple sentences, the structure will be subject will at first followed by shall have oblique will have, means according to subject or pronoun we will use these auxiliary verbs, then V3, then object. And dear student, never mix up because I and V के साथ always shall. So here यहाँ पे shall have हो जाएगा and he, she, it and name के साथ हो जाएगा आपका will have. ओके, सो यही कॉम्बिनेशन पूरे फ्यूचर टेंस में फॉलो किया जाता है. अफर्मेटिव सेंटेंसेस एग्जांपल, आई शैल हैव फिनिश्ड माय वर्क, they will have sold the sum. So in this case we can give the time reference also. Okay, I shall have finished my work by next Monday. They will have sold the sum by 4 p.m. today. I shall have finished my work by 2 p.m. today. Okay, so this is an expression of an action which is going to be finished in future time. In negative sentences, the structure will be subject, then shall oblique will, plus note, plus have. This is the difference. Means shall have, will have के बाद में नोट का यूज नहीं करेंगे. shall और will, shall have और will have दोनों के बीच में नोट का यूज करेंगे. That is shall not have, will not have. अब भी आपने देखा होगा डबल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं या डबल हेल्पिंग वर्ब होते हैं, उनके बीच में हम नोट का यूज करते हैं, न कि बाद में. Then V3 and object. I shall not have finished my work. So first person singular pronoun, shall auxiliary verb, not, then second auxiliary have. So shall and have के बीच में नोट का यूज करेंगे, न कि इसके बाद में. ओके, finished V3, my work, object. They will not have sold the sum. They will not have sold the sum. So this is about negative sentences. Now we will know how to form the interrogative sentences in future perfect tense. So this is the structure: shall oblique will at first of the sentence, then subject, then have, then V3 followed by object, and at last sign of interrogation. Example, shall I have finished my work? Shall I have finished my work by tomorrow? Shall I have finished my work by next Monday? So time reference if you give, it will become much better. Will they have sold the sum? Okay, so help auxiliary verb, subject, then have, V3, and my work means this is object. Okay, and my here is, my here indicates possessive adjective. Okay, possessive adjective. If you remember the table, I have already taught you about the pronouns, their subjective case, their objective case, their possessive pronoun case, and their possessive adjective case. So here it is possessive adjective case because it has been used just before a noun which is working as an object here. In negative interrogative sentences, the structure will be like this: shall oblique will come at first, then subject, then note, followed by have, V3, object, and at last
sign of interrogation. If we transform this sentence into negative interrogative, then let us see what the change will be there. That is, will they not have sold the sum? Will they not have sold the sum? So this will become negative interrogative. Here, shall I not have finished my work? Uses of future perfect tense with the words like tomorrow, next, by this time, by this moment, and at this moment. Okay, by this moment. So इसके साथ में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन टुमारो बाय दिस टाइम. द ट्रेन, सो टाइम रेफरेंस इज गिवन हियर. द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन टुमारो बाय दिस टाइम. माय ब्रदर विल हैव अराइव्ड at my home tomorrow by this time or at this moment. Tomorrow, or you can say he will have appeared in the exam tomorrow at this moment. He will have made the project by this time, this time you visit him next week. Okay, so by this time का यूज हमने यहाँ पे किया है. And one more reference is given, next week. It is about the object. This is about the future indefinite, future continuous and future perfect tense. Dear students, in our next class we will continue with the rules and structure of future perfect continuous tense and some conditional sentences which are very important from learning point of view. Thank you. Have a nice day.